मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ, मतलब कुछ भी है, जो भी टेंशन है, जो भी है, सबको साइड में रख दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, और अपनी एजुकेशन पे कंटिन्यू रहिए, उस पे एजुकेशन पे मतलब ध्यान रखें, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन, से हम कुछ भी कर सकते हैं। आई वांट टू कि मैं अपना 100% दे सकूं अपनी कम्युनिटी को आगे जो कर सकूं, और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। जिस तरह का एनवायरनमेंट और मतलब जो हम लोगों को चाहिए था वो यहाँ पर है, तो जस्ट लाइक उन लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस फील्ड में बहुत अच्छा मतलब आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, लोग ऐसे मिलेंगे। इन माय ऑफिस तो मेरे कलीग्स तो मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे तो फैमिली जैसा फील आता है कि हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे तो लगता है कि हाँ मैं अपने घर आ गया हूँ फैमिली की जैसे, तो ऐसा ही फील आता है। सबसे पहले सेफ्टी ट्रेनिंग हुई थी और मैं यहाँ पर आया, लोगों ने जिस तरीके से मुझसे बात की, मैं अपनी टीम से मिलकर गया, मुझे बताया गया मैं यहाँ पर बैक ऑफिस मैनेजमेंट ज्वाइन करूँगा, ये मेरी टीम है। तो मैं अपनी टीम से भी मिला और उन्होंने मुझे वैसा ही ट्रीट किया जैसा मैं शायद मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनसे मैं मिलती हूँ ना, तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है। मेरा ये ड्रीम था कि लाइक मुझे एक फैशनेबल जॉब चाहिए एक रेप्यूटेड कंपनी में, जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। आई थिंक मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करूँगा इसका। आफ्टर ट्रांजिशनल पीरियड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये चीज़ मुझे खुद को फील हुई है, क्योंकि पहले मैं लोगों से बात नहीं करता था, बहुत हेजिटेट होता था, और अभी मैं कंफर्टेबल होकर एटलीस्ट बात कर सकता हूँ।
जिंक में आने के बाद वो मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई है कि ये भी कुछ कर सकती है, शी इज एजुकेटेड और जिंक ने इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ, मतलब कुछ भी है, जो भी टेंशन है, जो भी है, सबको साइड में रख दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, और अपनी एजुकेशन पे कंटिन्यू रहिए, उस पे एजुकेशन पे मतलब ध्यान रखें, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन, से हम कुछ भी कर सकते हैं। आई वांट टू कि मैं अपना 100% दे सकूं अपनी कम्युनिटी को आगे जो कर सकूं, और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। जिस तरह का एनवायरनमेंट और मतलब जो हम लोगों को चाहिए था वो यहाँ पर है, तो जस्ट लाइक उन लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस फील्ड में बहुत अच्छा मतलब आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, लोग ऐसे मिलेंगे। इन माय ऑफिस तो मेरे कलीग्स तो मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे तो फैमिली जैसा फील आता है कि हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने घर आ गया हूँ फैमिली की जैसे, तो ऐसा ही फील आता है। सबसे पहले सेफ्टी ट्रेनिंग हुई थी और मैं यहाँ पर आया, लोगों ने जिस तरीके से मुझसे बात की, मैं अपनी टीम से मिल के गया, मुझे बताया गया मैं यहाँ पर बैक ऑफिस मैनेजमेंट ज्वाइन करूँगा, ये मेरी टीम है। तो मैं अपनी टीम से भी मिला और उन्होंने मुझे वैसा ही ट्रीट किया जैसा मैं
शायद मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनसे मैं मिलती हूँ ना तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो ही जाती है। मेरा ये ड्रीम था कि लाइक मुझे एक फैशनेबल जॉब चाहिए एक रेप्यूटेड कंपनी में, जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। आई थिंक मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करूँगा इसका। ट्रांजिशनल पीरियड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये चीज़ मुझे खुद को फील हुई है, क्योंकि पहले मैं लोगों से बात नहीं करता था, बहुत हेजिटेट होता था, और अभी मैं कंफर्टेबल होकर एटलीस्ट बात कर सकता हूँ। सिंक में आने के बाद वो मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई है कि ये भी कुछ कर सकती है। शी इज एजुकेटेड और जिंक ने इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ, मतलब कुछ भी है, जो भी टेंशन है, जो भी है, सबको साइड में रख दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, और अपनी एजुकेशन पे कंटिन्यू रहिए, उस पे एजुकेशन पे मतलब ध्यान रखें, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन, से हम कुछ भी कर सकते हैं। आई वांट टू कि मैं अपना 100% दे सकूं अपनी कम्युनिटी को आगे जो कर सकूं, और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए।
जिस तरह का एनवायरनमेंट और मतलब जो हम लोगों को चाहिए था वो यहाँ पर है। तो जस्ट लाइक उन लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस फील्ड में बहुत अच्छा मतलब आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, लोग ऐसे मिलेंगे। इन माय ऑफिस तो मेरे कलीग्स तो मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे तो फैमिली जैसा फील आता है कि हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने घर आ गया हूँ फैमिली की जैसे। तो ऐसा ही फील आता है। सबसे पहले सेफ्टी ट्रेनिंग हुई थी और मैं यहाँ पर आया, लोगों ने जिस तरीके से मुझसे बात की, मैं अपनी टीम से मिलकर गया, मुझे बताया गया मैं यहाँ पर बैक ऑफिस मैनेजमेंट ज्वाइन करूँगा, ये मेरी टीम है। तो मैं अपनी टीम से भी मिला और उन्होंने मुझे वैसा ही ट्रीट किया जैसा मैं शायद मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनसे मैं मिलती हूँ ना तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है। मेरा ये ड्रीम था कि लाइक मुझे एक फैशनेबल जॉब चाहिए एक रेप्यूटेड कंपनी में, जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। और आई थिंक मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करूँगा इसका। आफ्टर ट्रांजिशनल पीरियड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये चीज़ मुझे खुद को फील हुई है क्योंकि पहले मैं लोगों से बात नहीं करता था, बहुत हेजिटेट होता था और अभी मैं कंफर्टेबल होकर एटलीस्ट बात कर सकता हूँ। सिंक में आने के बाद वो मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई है कि ये भी कुछ कर सकती है। शी इज एजुकेटेड और जिंक ने इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है।
We welcome Travis and Ruchika Chawla to present a bouquet to our special guests. Travis and Ruchika Chawla to present a bouquet to Ms. Ella D. Verma and Ms. Reena Rai. Now we invite Ms. Hansa to give us a safety briefing of the auditorium. Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Hindustan Zinc. So currently we are sitting in Yashad Bhavan auditorium. It has one entry and two emergency exit at the back side. We have enough fire extinguishers that are kept here in case of any fire. Do not panic. Just gather at the assembly point, which is just outside our office garden area. And emergency contact numbers are already displayed here. Thank you. Thank you, Hansa ma'am. हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, और आज की शाम बहुत ही खास जो लेकर आई है हम सबको यहाँ साथ लेकर. Well, good afternoon and a warm welcome to all of you here. I am myself, Sonika Ripala, host for this beautiful evening, along with my co-host, Ashutosh. So, all right, everyone, I am Ashutosh. Once again, good afternoon. And it is really our pleasure and we are grateful that we have all of you. And we have around 150 participants available offline and around 500 on through the online, through the online mode. So, जब इतने स्पेशल गेस्ट हमारे पास आए हैं, हमारे बीच में आए हैं, हम चाहेंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको मिले, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें. तो आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहूँगा. बारिश का मौसम है. ए बारिश, ज़रा थम के बरस. वो आ जाएं तो जम के बरस. पहले ना बरस कि वो आ सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके. वाह वाह, that was amazing, Ashutosh. यार इससे ज्यादा थालियां तो वो बनती है. हाँ, एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो लगा नहीं? I know. नहीं. और भी ज्यादा. Yes. I guess थोड़ा सा एनर्जी लेवल यहाँ पे बूस्ट करना चाहिए. I have a trick to check the energy level. Okay. So आप लोगों को क्या करना है? 3 claps, 2 snaps. मैं करके बताऊं? So all right, everyone. So let's start. Faster, please, faster. Thank you so much. Thank you. Oh I guess my God. we are all set to start. Energy अभी peak पे है. ऑफलाइन ऑडियंस का तो ठीक है, ऑनलाइन ऑडियंस का क्या? हाँ, right. So do you have some way to check? Yeah. Huh? I think online poll would do. Right? Yeah, right. We should have Let's that go online with poll. Online poll. All the audience, especially the online audience, to engage you, we have a special poll. Poll on the screen, please. हम आपको एक क्वेश्चन देंगे and you get 15 seconds to answer the question and your responses will be visible here. Please put up the QR code.
All right, everyone online, offline, and everyone possible. You can scan the QR code for a special question that's going to appear on your screen. Everyone, QR code scanning, please. Or you can go to menti.com and enter the code. All right, we're coming up with question. Question on the screen, please. You got 15 seconds to answer. On a scale of 1 to 10, what's your energy level today? Oh my God, so many responses for my Josh is high, sir. It's good to see a lot of people in the moderate and high Josh energy. Ashutosh, look at the response rate, yaar. मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना यार 8 people है उस कैटेगरी में उनका क्या करें हम अब? Oh my God, that is increasing now. शायद मेरे को बोलना नहीं था मुझे नहीं पता है मुझे मत पूछो ना. Yeah, right. So I guess we can close now. Oh my God, 107. No, 109, and the number is just increasing with high Josh category. That's good to see. All right, what about the 14 people out there? एक काम करते हैं इस पोल को यहाँ क्लोज करते हैं मैं उनके लिए कुछ चाय कॉफी अरेंज करके आता हूँ till then you please continue so that they get some motivation you know हाँ एक काम करते हैं. I have one more question following up for them. okay All the locations audience, are you here with us? Let's see. Next question, please. Okay, for those who haven't scanned earlier, you can scan it again or go to menti.com and enter the code. Question, please. All the locations here. Let me check which location is like highly active. Dariva has a lot of audience. Udaipur, RM, Pannagar, Debari. That's so nice. That's so nice. More audience, please. All right, that's good. We have more than 150 audience, like very, very active in the high Josh category. right so जिनका नेट नहीं चल रहा उनका नेट चालू करके आता हूँ ठीक है? और जो थोड़े से जिनको नहीं पता I'll arrange tea coffee for them so till Great. then you please continue Sonika. Great. Oh my God, I'm completely excited to start the event now. Without further delay, now we invite Ms. Ruhi Sherwani, Lead Talent Management, Hindustan Zinc, to brief us a little about what is inclusion and what the event is about. Welcoming Ms. Ruhi Sherwani. Thank you so much, Sonika. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to our esteemed guests, leaders, colleagues, business partners, and families. Here we unveil Zinclusion to everyone. Zinclusion, Embracing Differences, is a program which focuses on larger objective of combating discrimination, inequality, biases by creating a fair and just workplace that upholds human rights and values. The logo of Zinclusion speaks about how we at EdZL embrace differences, value inclusivity, not just for a specific set of group, but infinite forms of diversity. Diversity is a mix, and through Zinclusion, we are making the mix work here at EdZL. We have been speaking about diversity since ages, but it was somewhere around 2019 where we felt the need of diverse workforce to foster a culture of innovation and excellence. We focused on hiring, inclusive infrastructure, development and growth policies, education, awareness, undoubtedly the sponsorship of leaders, the support system to create a conducive work environment. With these initiatives, the gender diversity, which was 12% in 2019, has reached to 20% as on today. And we aim at 30% in near future. Still, we felt that we are not doing enough.
on diversity, and we went a step ahead to have diversity beyond gender. And that is when we have Ragini, Yashvardhan Pandey, and Travis Gulshan joined EdZL. We have not only limited our journey restricted to the operations, but we have deployed our principles to the communities in which we operate through our initiatives of Sakhi, Nandghar, Shiksha Sambal, and many more. Friends, we are now making strides and chartering new territories with Zinclusion. And this holistic approach aims to create positive and inclusive culture that celebrates and leverages unique strengths and perspectives of each individual. I would like to end with an example. Diversity is having a seat at the table, inclusion is having a voice, and belongingness is having the voice to be heard. Thank you so much, and all the best for the program. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was a wonderful progress on what we as a company have made. And our vision also reflects our spirits to welcome and embrace diversity and differences as a whole. Now, we invite our one and only Chief Executive Officer, CEO Zinc Business, onto the dais to share a few insights on inclusion. Very good afternoon to all of you. I know very well that everyone is patiently waiting to hear Ella, not me. She is the star attraction today. Nevertheless, just to sensitize you that yes, I see many हमारे सखी परिवार से भी लोग आए हुए हैं. आप सबको भी वेलकम. हम लोग क्यों इस बारे में सोच रहे हैं? हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी है जो कि जिंक केवल भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में सप्लाई करता है. तो हम जब एक ग्लोबल कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में है, हमारा जो दृष्टिकोण होगा, हमारा जो आचार व्यवहार होगा आपस में और हमारे बाहर के लोगों के साथ, वो केवल एक सीमित दायरा में बांधा हुआ नहीं हो सकता है. हम सबको उसी तरह बिहेव करना है जो हमसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी है तो आप सारे दुनिया में जो मान्यताएं हैं सोसाइटी में, आप उसको अपनाएंगे और उसको अपना करके आप बिजनेस करेंगे. आप सब जानते हैं, अगर आजकल चाहे हम कहीं पर भी जाएं, फॉरेन में, इंडिया का किसी कोने में, सब जगह में आजकल यही है कि हाउ टू मेक द स्पेस अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of gender, irrespective of sexual preference, irrespective of उनका कोई पर्टिकुलर एबिलिटी या डिसेबिलिटी हो, सबके लिए अगर भगवान किसी को किसी रूप में पैदा किए हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं उसका उपयोगिता है और उसको ढूंढना हम लोग का काम है. हम आपस में भी द सो कॉल्ड जो अभी तक हम लोग जिनको नॉर्मल मानते हैं, हमारे बचपन से दिमाग में जो चढ़ाया गया कि यही नॉर्मल है, तो वहां भी जब हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, हम लोग एक दूसरे का एकोमोडेटिव हो जाते हैं. हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं किसी को सिलेक्शन के लिए, क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन काम करेगा, इसको ले लीजिए. ठीक है, तो हम लोग ऑलवेज उस भावना से चलते हैं कि चलो सब लोग तो दुनिया में आइंस्टाइन नहीं बनेंगे, लेकिन जो है जो एबिलिटी है उस हिसाब से काम करेंगे. सेम दृष्टिकोण रहना चाहिए बाकी सबके लिए भी, कि वो सबके जैसा बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी काम में हो सकता है, किसी स्किल में, किसी उनका एबिलिटी में वो दूसरों से अलग हो, और उनको समझना बड़ा जरूरी है. आप सब जानते होंगे, जिन लोग पेरेंटिंग किए हैं, जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, आप सब देखे होंगे कि कोई 2 बच्चे एक ही घर में एक जैसा नहीं होते. आप लाख कोशिश कर लीजिए, पेरेंट्स बराबर है, पढ़ाई लिखाई बराबर है, अपने म्यूजिक टीचर सेम रखा, अपने ट्यूशन मास्टर सेम रखा, लेकिन दोनों बच्चा बराबर नहीं होते. हर बच्चे को उसके जो जैसा वो आया है दुनिया में, जो उसका अपना ब्रेन लेके वो आया है या आई हुई है, उसी हिसाब से उस बच्चे को सोचने से तब वो बच्चा बड़ा होता है ठीक ठाक. अगर हम लोग बोलते हैं नहीं हमारा तो ये मानदंड है, इसी के अंदर बच्चा को बड़ा होना होगा, नहीं होगा तो आप समझो, तो उस घर में जो है शांति कभी नहीं हो सकता है. तो ये चीज, जिन लोग बड़े फैमिली से आए, जैसे हमारे घर में बचपन में हम लोग 6 भाई 2 बहन थे, 6 को 6 अलग है, कंप्लीटली अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है. देखने में भला सिमिलैरिटी हो लेकिन एटीट्यूड में नहीं है. 6 में झगड़ा उतना ही होता है, प्यार उतना ही होता है, मारपीट उतना ही होता है.
तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि 6 बच्चे होंगे तो इन लोग आपस में बड़ा घुल मिल करके रहेंगे, कोई घुल मिल के नहीं रहता है। 2 बच्चे में भी वही लड़ाई है। 2 बच्चे में 10 साल का गैप रखिए, लड़ाई उतना ही है। 1 साल का गैप रखिए, लड़ाई उतना ही है। क्योंकि ये इंडिविजुअल भगवान बनाते हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका, अपना अपना जीवन शैली, अपना अपना एस्पिरेशन, एम्बिशन, लाइक डिसलाइक, उसको समझना एज ए पेरेंट या एज एन एडल्ट हम लोग का काम है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमको चलाना है, हमारे पास अगर 3,000 4,000 एग्जीक्यूटिव्स है, 25,000 वर्कमैन है, हमको भी समझना पड़ेगा कि वो 25,000 के 25,000 तरह के लोग हैं। अगर 4,000 हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, 4,000 एग्जीक्यूटिव 4,000 तरह के लोग हैं। उन सब का अपना अपना अलग अलग एम्बिशन है, अलग अलग थिंकिंग है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये अगर समझेंगे, अगर उसमें सेंसिटिव होंगे, तो देन हमारे जो कंपनी है, इट विल ट्रूली बिकम ए वर्ल्ड क्लास कंपनी। जो हम बार बार बोलते हैं कि इसमें हम लोग सब अगर एक हो जाए तो फिर 4,000 एग्जीक्यूटिव का जरूरत नहीं है, कोई एक एग्जीक्यूटिव काफी है। 4,000 के 4,000 अलग अलग है, तभी 4,000 की जरूरत है। आप अगर घर में गार्डन बना रहे हैं, एक फूल से गार्डन नहीं बनता है। गार्डन बनाने के लिए हर तरह का फ्लावर होना जरूरी है। आप अगर कोई सोचेंगे कि एक ही तरह का हम फूल लगा दें, लाल फूल पूरा गार्डन में, तो गार्डन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग को गार्डन बनाना है, हम लोग को कंपनी को ऐसा बनाना है जिसमें हर तरह के लोग हो, हर तरह के थिंकिंग हो, हर तरह के बैकग्राउंड से आए हुए लोग हो। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक हायर मिडिल क्लास से आए, कोई वेरी पुअर बैकग्राउंड से आया हो, कोई फर्स्ट जनरेशन जॉब कर रहे हो। सबको लेके चलना हमारा काम है एज एन एग्जीक्यूटिव। उसमें परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, मेरिट जरूर रहेगा, परफॉर्मेंस बेसिस में लोग आगे बढ़ेंगे। एंड इसी सिलसिले में ये कड़ी जो है, हमने पर्सनली बहुत इनकरेज एंड अनुप्रेरित हुए थे जब हम पहले बार यूट्यूब में एला जी का बात सुने, एंड फिर हमने उनका काफी सारे वीडियो देखा, तो हमको फील हुआ कि बहुत सारे चीज हम लोग समझते नहीं है। हम लोग जरूर पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन समझते नहीं है। समझने के लिए सामना सामने इंटरेक्शन करना जरूरी है। उसी सिलसिले में हमने उनको इनवाइट किया है। ये कोई इकलौती बार ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम लोग सेलिब्रेटरी की साल में एक बार 15 अगस्त आया और चला गया। ये हम लोग का एंगेजमेंट जो है इस डायरेक्शन में होगा। हर तरह के प्रेफरेंसेस के लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे, तो क्या होगा, हमारे अपना जो थिंकिंग है वो और ब्रॉड होता जाएगा। जैसे थिंकिंग ब्रॉड होगा, आपका दिमाग में और अच्छा अच्छा नया नया आइडिया आएगा कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए और सबके लिए काम करने के लिए। आप सबको धन्यवाद, सब लोग आए हैं, एंड आई एम श्योर वी विल एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर. It was truly thought provoking to each one of us. Like every point that sir has mentioned is provoking thoughts into my brain कि ऐसा भी हम सोच सकते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा है, and like it was truly brilliant sir. All right, moving on to the next segment, the one that we're eagerly waiting for today, a leadership, a talk by Ella D. Verma. All right, let me take a moment to introduce Ella Verma to you. Ella De Verma, a model, content creator, paves her voice to empower the transgender community from within and advocating for their rights and well-being. Ella emphasizes the importance of cultivating self-esteem and overcoming personal challenges as pathways to happiness and prosperity. Widely regarded as one of the top creators in her field, she achieved the remarkable feat of becoming first runner-up in the Miss Trans Queen India pageant. As the chosen representative of India, she'll proudly compete in the Miss International Trans event held in Belgium. Let's take a moment to watch a short clip on her journey. अगर कोई ना देखे तो कौन हो तुम? अगर कोई ना टोके तो कौन हो तुम? तुम भले न मानो मगर जैसे हकीकत में हो सबसे खूबसूरत हो तुम। रिप्रेजेंटिंग दिल्ली, जो शहर नहीं महफिल है, I am Ella De Verma, the youngest contestant in the history of Miss Trans Queen India. Having a turbulent childhood and being subject to many years of bullying took its toll on me. I remember looking in the mirror and barely recognizing the broken down and hollow version of myself that was left from living an inauthentic life for so many years. And then, with the last bit of fleeting hope and courage that I had left within me, I took perhaps the greatest risk that I have ever taken. And that was to be seen as I truly am.
I came out to my family and friends about my transgender identity and embarked upon the most magical and fulfilling journey of self-discovery. It wasn't easy, but it was right. I cried, but I also conquered. I lost, and then I loved again. The most testing bit of this journey, however, was this immense loneliness I felt. There weren't very many people like me in media or films that I could relate to. And my friends and family, as lovely as they are, could only sympathize and never truly empathize. I soon realized this major lack of representation that existed with regards to the transgender perspective. This lack of representation is what fueled me to talk about my journey publicly. I started making educational videos about the psychosocial aspects of being transgender. And today, with nearly 15,000 followers on Instagram and YouTube combined, I have managed to help people all across the world feel seen and represented through my work. Today, I am a model, a content creator, and an aspiring psychologist. I live a life that's authentic and rewarding, and I'm thrilled to have a platform like Miss Trans Queen India to represent not only myself, but the millions who are like me, who are just as capable, worthy, and beautiful, only not as lucky. It is my greatest honor to be a voice for those whose fates have been bound to the red lights, whose destinies have been locked away in brothels, and hopefully do my bit of creating a world where transgender people living respectable lives is the standard and not a sensation. I'm more excited than ever. Without further delay, welcoming you onto the stage, please. Ella. Zordar thalia, please. Can't hear you. Thank you so much for such a wonderful and warm welcome. And I must convey my great gratitude and honestly respect and just admiration for people taking the initiative to organize something like this. And I know that video was a very serious tone. I had a cinematic vision. I was trying to be very serious, but it's not going to be that serious now. It's a lighthearted session because, you know, you watch that video and you think maybe I've had a very difficult journey and I've seen all these things in my life and I had to come over this mountain. But to everyone in this room, I ask you now, honestly, kiski life easy thi? Who wakes up every day in this room and thinks, wow, my life is so easy? Not a single person in this world. Har kisi ki life mein mushkil hai. The only difference that comes for people like me and of my community or any minority that is oppressed is we lose the option of living our life and getting out of hardships. Do you realize? Hardships come to every single person, but only few lucky ones realize their own worth and capability to be able to deal with those hardships. And I'll tell you my story. I'll tell it, you know, series by series. So let's go all the way back into my childhood. And childhood is very, very important. The first 5 years of your life are the most formative years altogether. I'm going to put this down. Sorry, I'm 19 years old. I have to have my phone on me all the time. But yes, the first 5 years are really formative in your life. And people really think, you know, कि आपके साथ 1 साल में क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, 2 साल में क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है. But these times are really important for the establishment of self-esteem and how you think about yourself. आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं जब आप शीशा देखते हैं. And where these things come from is how people around you treat you. जैसे आपके पेरेंट्स, फैमिली, केयर गिवर्स, दोस्त ये 55 के सालों में आपके साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना, वो जो चीजें आपको आपके बारे में बताएंगे वो आपका इनर डायलॉग बन जाएगा. तो बचपन में जिसको किसी ने बार बार बता दिया कि आप बदसूरत हो, तो उसने मन में वो बात बिठा ली.
कि मैं बदसूरत ही हूँ। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बोल के बताए। हमारे कल्चर में बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए हाथ उठाना बहुत नॉर्मल बात है, और मेरे घर का माहौल भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है। अल्कोहल थे, सब्सटेंसेस थे, काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, और ऐसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बच्चे पे निकल जाती हैं चीज़ें। सो दैट वाज वेयर द लो सेल्फ एस्टीम किक्ड इन। क्योंकि जब बच्चे के साथ कोई गुस्सा करता है उसे, या बच्चा को कोई डांटता है या उस पर हाथ उठाता है, अभी मैं आपको मारूंगी तो आप सोचोगे कि ये कैसी है, ये मेरे को मार क्यों रही है, इसके क्या भाग बनता है। लेकिन बच्चा है ना, उसमें रीजनिंग की पावर नहीं होती। मतलब कि जो उसके साथ हो रहा है वो उसको रीजन तक ज्वाइन नहीं कर पाता। तो एक बच्चे के लिए ये सोचना कि मुझ पे हाथ उठाया गया, वो इंसान बुरा है, बच्चा ये सोचता है कि मुझ पे हाथ उठाया गया, मुझ में कुछ गलत है। That's where my low self-esteem has its roots, early childhood. फिर वो एक फीलिंग ऑफ फीलिंग लेस देन लेकर मैं गई स्कूल में। स्कूल में मेरे को सब अच्छा लगता था। आई वॉज वेरी वो एक बच्चा होता है ना जो क्लास में ही नहीं बैठता, हर हफ्ते कोई कंपटीशन, कभी पेंटिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। लाइक मेरी टीचर्स मेरे पीछे बैठती थी, कॉपी तो कंप्लीट करो, कंपटीशन तो आते जाते रहेंगे, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स है। दैट्स हाउ आई वाज, एंड आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग। और शुरू के कुछ साल, जैसे 3rd 4th ग्रेड तक, जब बच्चे बच्चे होते हैं, तब तक सब कुछ बहुत आराम से चला। फिर एक एज आती है जब बच्चे चीज़ें सीखते हैं आसपास से, और लड़के लड़कियों में फ़र्क आता है, और बच्चे ना थोड़े से मीन, बुलिंग, ये सब इस एज में शुरू आता है, जब आपको पता लगता है कि हमसे कोई ऊंचा या नीचा है। तो मेरी भी वो एज आई, उसमें भी मेरी बहुत टांग खींची। कोई मेरे को कहता था ऐसे क्यों चलते हो, वैसे क्यों चलते हो, डांस ऐसे क्यों करते हो, बोलते ऐसे क्यों हो। तो जब मेरी हॉबीज़ का मजाक उड़ाया गया, जब मेरा नाम देव हुआ करता था, तो वो कहते थे कि देव ऐसे डांस क्यों करता है, देव ऐसे क्यों बोलता है। तो देव ने क्या सोचा कि अगर सभी मिलके मजाक उड़ा रहे हैं तो गलती मेरे में ही। And what I did here, which I recognize as, I like to look back at it now as an adult, and I think of myself as foolish. और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे कि क्यों मैंने लोगों की बातों में आके अपनी इतनी सारी हॉबीज साइड में रख दी, क्यों मैंने इतने टाइम तक अपना करियर वहीं से बूस्ट हो जाता, वहीं से मैं उन चीज़ों को परस्यू करती तो मेरे को कितना वो अपलिफ्ट मिलता। बट आई हैव टू हैव काइंडनेस एंड एम्पैथी फॉर माई सेल्फ, दैट आई हैव टू रिमेंबर कि वो 10-11 साल का बच्चा था, एंड दे गॉट कन्फ्यूज्ड, एंड दैट्स द सैड पार्ट, कि जब आपके साथ बुरी चीज़ें होती हैं और आपको लोग बुरी चीज़ें बोलते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी चीज़ों का हकदार मानना बंद कर देते हैं। Difference with me is, I had a major wake-up call in my life. I was having a very difficult time. Sometime around a year and a half ago, this is when my life changed. It's a very fun story. So I was a friend of mine, and I was telling him about a rough patch and I had. And I was telling him कि ये problem है, वो problem है. And he said this one line to me. He said to me कि Ella, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, but I want you to remember that everything is not your fault. I know you blame yourself for everything, but हर चीज तेरी गलती नहीं है. That is where my life changed, because you know what that gave me? It gave me perspective. उस दिन के बाद से day 1 to age 18 मैंने अपनी लाइफ के सारे बैड एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में रिप्ले करा, बट दिस टाइम आई आस्क्ड माई सेल्फ, मेरी गलती कहाँ थी? अगर मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ और 10 लोग हंस रहे हैं, तो उसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो इनोसेंटली अपना हॉबी परस्यू कर रही हूँ ना। अगर मेरे को ऐसे चलना, ऐसे उठना बैठना, ऐसे बाल करना या मेकअप करना ये सब पसंद है, तो मैं किसी का कुछ keep the mic closer. Sorry, were you guys hearing me this whole time? Okay, now you're going to hear me louder. Right, so it was a matter of actively revisiting places of guilt and then learning to forgive myself and ridding myself of that guilt. And then what happened? I gave myself the chances that I was robbing myself of. पता है क्या होता था? When I got on the internet, in the lockdown, I started working. I would post pictures of myself. I would do my own hair and makeup. And then these big brands will reach out to me and they'll be like, you're so good at what you do. तो आप हमारे लिए भी शूट कर दो ना. But मेरे को क्या था कि नहीं, आज तक तो मेकअप करने पे मेरा मजाक उड़ाया है. तो ये ब्रांड वाले असल में पागल हैं, इनको पता ही नहीं. आपको पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा मजाक हूँ. आपको पता ही नहीं कि मेरा काम कितना गंदा. अरे सब हंसते हैं, मैं आपके लिए क्यों शूट करूंगी? So actively I was pushing these professional opportunities away. Then I got a little bit older and I started, to experience dating and the romantic world.
उसमें ना मेरे को कोई अच्छे से ट्रीट करता था तो मैं डर जाती थी कि नहीं नहीं नहीं, आज तक तो लड़कों ने सिर्फ मजाक उड़ाया है, तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई खोट है, तुम दूर हो जाओ मुझसे. यू नो, पुशिंग लव, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व. किस किसकी इंस्टाग्राम कैप्शन है, दैट वाज मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And then when I realized that I am worthy of good things, I got out of my home. I gave that interview. I got on that train and I traveled solo. I never got out of my house. I had a very guarded and strict upbringing. But now I had this fire in me, this rebellion, because I wanted all my time back. So many years that I spent hating myself. I wanted to, pura vasoolna tha mere ko. So I got out and I did everything. And at 18 years old, I became the first face of transgender experience for India's largest intimate wear brand, sitting in my bedroom. That's all I did. I was working from home. I was never getting out of my house. Thank you. Oh, and by the way, the 15,000 followers I mentioned in the video is somewhere around 73,000 now. So that was also quite a leap. And then, opportunities came and came and came. I did so many shoots for so many people. I've given 3 TED Talks. I've given 1 Josh talk. I was also crowned the first runner-up of, one of the largest national pageants for transgender women. And as they said, soon I'm going to be representing India internationally. So you are looking at a Miss India at the moment. But the sad reality of the matter is, beneath all the glamour, and when I take my crown off and I go into that passport office, because I need a passport to get out of the country to represent it internationally, they tell me कि मेरा काम नहीं होगा. When I went to change my Aadhaar details, my PAN details, I have every law, every provision that I could, every provision that I could have ever needed is given to me by the country, is given to me by the constitution. But when I go in office, the person who's sitting at the counter is not sensitized, does not know that it is a possibility for someone to change the gender marker on their ID card. And therefore they tell me, kaam nahi ho payega. And then I have to literally go into offices, fight people, tell them that this is their job and they have to do this for me, and do all this extra hassle just to get this basic necessity met. My basic rights I need to fight for. And nobody should have to do that. As a psychology student, I've been really passionate about psychology my entire life. And I want to pursue my higher education, but my 10th or 12th certificates, they're still in the process of being changed. The NALSA judgment allows people to choose how they want to be mentioned on their passports without, sex reassignment surgery, because that is not affordable for everyone. That is not safe for everyone. Everyone is not a candidate for surgeries like that. Even now, when you go into offices and you tell people that you're transgender and you want a gender marker changed, they'll ask you for proof of surgery, which is illegal, but nobody cares. And nobody knows. That's the thing. My own family, my mother and my father are such strong allies and they're advocates for the community now, but only because unke apne bacche ke sath aisa kuch hua. And that's where all things, really come into perspective, because we don't care. जब तक हमारे आंगन में नहीं है, तब तक हमारी problem नहीं है. But the reality is, if you're going to be like that, you're going to have a world that's very small. And I don't want all of you to be in a world that is small. Culturally, the way that we are raised, we are taught obedience, 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 compliance, compliance, compliance. ऐसे करना है. क्यों करना है? क्योंकि बड़ों ने बोला. And I want all of you to have a fire of rebellion in you, because that really opens up your perspective in life. When somebody tells you to do something, very simple, ask them why, and never stop until you get your answer. Because पता है क्या, we spend so long agreeing to things जिनसे हम agree करते भी नहीं, listening to people जिनको हम respect करते ही नहीं, pretending to like relatives जिन्होंने हमारे साथ property scam करा होता है, but family function में सबसे हंस के मिलना पड़ता है. And I want you to get rid of that. I want people to experience genuine happiness, not just happiness that looks nice on family portraits or social media or for your job resume. I want you to go out there and live a life that is genuine. I want you to have ideas about yourself that are genuine. I'm asking this to you right now, a lot of people in this room, young women especially, you must have a bunch of insecurities,
my face is to this, my waist is to that, my hip is to that. Now ask yourself, when did you start to think that way? The thing about insecurities is they're not natural. Human beings aren't born insecure. Human beings aren't born with this natural instinct to talk poorly about themselves. ये सब सिखाया जाता है. Every little insecurity, every little speck of negativity and hate is all taught. And now I want all of you to, after when you go home, trace every negative thought, every insecurity, every bit of hate that you have to its root and then question it. The reality is, आप में से कोई भी बदसूरत नहीं था जब तक किसी ने आपको बदसूरत बोला नहीं था. आप में से कोई बदअकल नहीं था जब तक किसी ने आपको बदअकल बोला नहीं था. और आप में से कोई भी सिर्फ रेड लाइट पे तालियां बजाने के लायक नहीं था जब तक जबरदस्ती आसपास वाले लोगों ने आपसे आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, राइट्स और हेल्थ केयर छीन लिया. And that is the reality of my community. We don't want special treatment. We don't want to be anything amazing. I'm so tired of this. I'm a child. I don't want to be anyone's inspiration. You know, people come up to me and they say, you're so motivating, you're such an inspiration. And I say, mujhe nahi banna inspiration. I want to be an Indian. Mujhe meri ID de do, mujhe mere rights de do, and that's more than enough. Don't glorify me. We don't want the claps. We don't want the flags. We want the basic life that all of you have. And I want you to look at us with that perspective. I don't want you to look at us as someone who's somehow born less than or somehow born bichara bichari. We are people who are born able, worthy, talented, and with so much variety, but only robbed of reaching our full potentials. You know, when I say we're born with so much variety, so every group of people has a bunch of diversity. When I say Rajasthani people, some of you will have a certain image. Some of you will have a certain image. Most people will think desert, but we know that's not a fact. And the reality is all groups of people have diversity within them. And just like that, transgender people have diversity as well. You know, one of the very common things that I often hear is, you're transgender, but aap to sundar ho. Aapko dekh ke to lagta nahi. And thank you for telling me that my community is inherently supposed to be ugly. But you know, there is a very strong belief that all of us look a certain way, or all of us come from a certain walk of life or have certain backgrounds. But the reality is, like any group of people and like any community, transgender community also has a bunch of variety. You know, I've been into hair and makeup and modeling, and I've done all these shoots, and now I'm trying out for, you know, commercials and movies. Recently, what happened? I gave an audition for the role of a woman. They gave me a review that actually we're going to cast a biological woman. This role is for a biological woman. We can't cast a transgender woman. Okay, fine, fair argument. Then there was a commercial being shot about a transgender woman, and they wanted to cast transgender actors. Then I gave that interview. I got selected, and you know, they cast me for the role. And one day before I'm supposed to fly to Bombay to do the shoot, क्या रिव्यू आता है मेरे को कि हाँ हमारी क्लाइंट से बात हुई थी और क्लाइंट कह रहे हैं कि ये तो देख के लड़की लग रही है, स्टोरी कन्वे नहीं हो पाएगी. You know, that's the thing. They want us to be portrayed as something that's otherworldly, something that's bechara. You know, even when you go to events like this, let's say you go to a pride parade. You guys are familiar with what a pride parade is? Okay, it's basically when queer people come together to celebrate. You know, it's just like a people coming together celebrating. It's like a barat of gay people, and it's really fun. Now, when media goes there, media will only photograph people who look slightly flamboyant and slightly different, which nothing wrong with that. That's a part of the community, but they will never ask you to show parts of our lives that are just like yours. And that's what creates a bigger disconnect, because you're actively taught that I am something that you are not, and you are something that I am not. But the reality is, it's all the same. I bunked my classes the same. I had the same breakups. I get with the same argument with my parents, and I have a very similar life to yours. The only thing is, you don't hear about our stories. You hear about our sad stories. When I give interviews, they ask me, ma'am, कोई वायलेंस की स्टोरी बताइए ना, कोई अब्यूज की स्टोरी बताइए, कोई असॉल्ट, थोड़ा इमोशन, थोड़ा कुछ डालो. उनको दिखाना ही ऐसा है.
And that's what I'm here to tell you, that give us spaces to be something except that victims that make you look good. The reality is a lot of us, people want us to look suppressed because हमें बिचारा दिखा के महान दिखने वाले बहुत हैं. And it's a very big fear in society कि जिस दिन बिचारे महान बन गए, हम तालियां कैसे बटोरेंगे. And that is keeping my community from prospering in so many ways. Thank you. And I think that will be my closing message is when I say I want to empower the community from within the community is we have waited for empowerment to come from outside. We have waited for NGOs. We have waited for activists. We have waited for parents, family, governments, but it's not happening. It will only happen when you believe that you are worthy. You will only get good things in life when you believe that aap achhi cheezon ke hakdar ho. And I want you to go home with that thought tonight. Thank you. Oh, we have questions. So Ella, after your speech, I can think of only one saying. You are legit a phoenix that rose from the ashes. Is it not, everyone? A phoenix that rose from the ashes. The generosity, your resilience, facing one problem after the other. It's truly inspiring. It's not only inspiring, but it's also a catalyst for us to think on why diversity has to be embraced, differences have to be embraced, and inclusion has to be there for each one of us here, irrespective of caste, creed, gender, race, ethnicity, like anything. The world is a place for everyone. All right. Now we have a quick Q&A round, if you're comfortable. Yeah. All right. So if anyone has some question or you can take some online questions as well, Vaishnavi. All right, any questions from the audience? All right, we have a few hands raised there. Ella, you are way more beautiful in person. If not a beauty pageant flag bearer, what you would have been? I think I would have definitely pursued my higher education in psychology, which I'm going to pursue anyways. But I think that's where I would have been. I would have had a very academic career in psychology, which I am doing on the side right now. But because of my circumstances, I can't do it full time. But that's definitely because, psychology and self-esteem and trauma healing, those things really changed my life. So it was always big on my list of dreams to be able to do that for other people. So I think somewhere in the field of psychology. Okay. So your talk has already, is telling us you are more than halfway there into becoming a psychologist. It was very wise. Thank you. Any Do you other have questions? any more questions? If I close my eyes, do you have any questions? If I won't judge, do you have any questions? I promise you anything, even casual questions. आप बात करोगे तो ही conversation खुलेगी. Don't be scared. Any question? Please raise your hands. We'll just pass on our mics. Yeah. Okay. I think it was a wonderful audience. No, I And- have a question. Oh, I have a question. So until a few years ago, I didn't know there was a beauty pageant competition for transgender as well. So what was your response like when you got to know there was one? And you can, it's a stage for you. you know why you didn't know until a few years ago that there wasn't a pageant? Because until a few years ago, there wasn't a pageant. This woman right here, Miss Rina Rai, came up with Miss Trans Queen India 5 years ago. So it's a relatively new initiative, and that's why you didn't hear of it. And when I did hear of it, it was definitely not something that I saw myself pursuing because I grew up feeling ugly and unworthy. So why would I want to be on a competition stage that, people expect that it, judges you on very materialistic and objective means. But then I looked into deeper studies about pageantry and how it really gives platforms to my causes. And my causes, most importantly, being the psychosocial aspects of transgender people. It was just this catalyst, this force for me to amplify that even more. And when I found that, I was like, okay, great. I'm a very lucky girl and I have this platform, and I went for it the second I could. That's nice. That's really good to hear. So do we have any questions?
I guess we have some questions online, right? Yeah. Okay. We'll unmute Chandira. So Okay. Hi, So we have Chandria. people from our locations joining us. Okay. All right. Then anyone from any location is welcome. Akshita is asking, just a second, they're just. Hello. Hi. Your speech was very inspiring, and I just wanted to know, since you mentioned that your families are now a very strong ally, but in the early phase, you must have faced a lot of issues, a lot of problems. So how did your family deal with maybe the reaction of your relatives, and how did they support you now? Thank you so much for that question. And I'll tell you, my family definitely had a very difficult time. And, you know, one thing that I look back and I realize is this young blood that I kind of regret. And I was like, mere parents kyun nahi samajh rahe? Mere parents kyun nahi samajh rahe? And I had so much anger built up for the longest time where I was like, how dare my parents, you know, not immediately accept me. But then as you grow older and you look back at things with slightly more empathy, you have to realize that this is something that they were never taught about. So I was, you know, there were times where I was actively removed from invitations of family functions. My father told me he wished I was dead because he didn't know what to do with me at the time. And all these things really had an impact on me. But at the end of the day, I can look back and recognize that they were heartbroken as well. I was my parents' first and only son. You know, that is a heartbreak in itself. And it's almost like grieving the loss of someone that didn't pass hurt and sad and all those things as well. And we had therapy sessions together. So we did family counseling. That was really helpful. And eventually with time, when my parents saw that I was genuinely happy in this life, they came around. And also, I think it came from a matter of really prioritizing what was important to them. And at the end of the day, any parent, I think, will actively choose their child's well-being over, you know, trying to portray this perfect image. So it was really just a human reaction, and it took the time that it took. And that's how I handled it. Thank you, and I hope that the information that you're spreading, So the next generation of parents are more aware. Yes, it is wonderful. Thank you. We have Yeah. another question from Pantnagar. Pantnagar VC room. 3 seconds. All right. Wait. Any questions in the offline? I see Pantnagar. your hands raising. Hi. Yes. Hi, Sonika. Are we audible? Yeah, Kshadij. Can you give us like 20 No, seconds? no, let's take their question, please. Online? Yeah. All right. Yeah, Kshadij, go ahead. Yeah. First of all, hi, Ella. Thank you for such an inspiring speech. And thank you for joining us. And I'm sure a lot of our executives and all our Hindustan Zinc family must be really inspired by your speech. So now that you're taking part in an international pageant as well, so I just had a question on that line, that how far do you see that India as a nation is right now when compared to other developed countries like USA or Germany, or take any other developed country when it comes to LGBTQ rights and their laws, and what are the major steps we can take as a nation to go in the right direction? Right. I think that's a question that's, you know, a really important discussion. And as far as my country is concerned, I know that my country is far ahead of all the other countries. You know, India is home to the oldest cultural transgender community in the world. We were very liberal, we were very accepting. You go back to the time before colonization, and you realize that the values of tolerance and acceptance and love and sexuality and fluidity have been deep rooted in our culture, in our society, you know, for a very long time. And so India, I think, even though we're having a difficult time because colonization did kind of taint our images of us, from small things like thinking Gora is better to thinking gay is bad. All these things I learned. But I think India has an advantage if you think about it, because we have what we need.
Other people have to find what we already have. हमारे वाला बस drawer में घुसा हुआ है. You know, we need to find the right drawer and pick out our own authentic values and go back to our roots. So in that way, I think if people, you know, with enough initiatives like this and more, India has a luckier chance of being, you know, this accepting and loving society, because we don't have to learn, we have to wake up. And that's the easier thing to do. So I think India has an advantage in that regard. Thank you so much. Thanks, Annagar. We had one question there. Please help her with the mic. Yeah. Works. How we can embrace differences. Okay, I think the key points that we can embrace differences is by realizing that there are very little differences. That's again, you know, it goes back to realizing the conversation of how different are we really, you know. So it's a matter of questioning differences from the root and questioning hatred from the root, and realizing that a lot of it is based on things that aren't factual. And a lot of us, also the opinions that we have, it's opinions drawn from the wrong, it's like a wrong conclusion. So I'll tell you, when people push themselves away from the LGBT community, let's say examples of STDs and STI. You know, you look at studies in America during the HIV/AIDS epidemic, and the studies say that the rates of HIV and AIDS are higher in the LGBT community amongst gay men. Then you look at the study further and you find out that the rates are higher in Hispanic and gay men, Hispanic and Black gay men, as in minorities that have, you know, financial disadvantages. So you realize it's a matter of first, you know, having, being homosexual. So your sexuality is not normal to begin with. Then accessing safe sex and everything you need for that is even difficult. And then therefore that community has a higher rate of this disease. And so instead of taking all this information and drawing the conclusion of this minority is suffering, we come to the conclusion of this minority is dirty. They have the disease. So it's a matter of really changing perspective and putting things into place, and, you know, drawing conclusions respectably with enough empathy and sensitivity to other circumstances. When you say that why are transgender women, all they want is money, all they want is sex, they go into sex work and they beg on the streets, why can't they do jobs? I'll do a job, give me my ID, I'll apply. I'll go to college, I'll get my education, give me my educational documents that I need. So it's really a matter of drawing the right conclusions, and that will create inclusivity and help us embrace diversity. To realize that diversity in itself was created to divide us. And sorry if I'm going on a bit of a tangent here. I love talking, but I want to tell you this really fun thing. It's, आपने सुना है ना कि लोग टूट पड़वाते हैं ताकि they can get their own benefit. So even now when I go back to colonization, when people from outside want to take over a country and they see that this country is so loving, people of all colors, races, genders, identities are living together, हम अपने पैर कैसे जमाएं? You get them to hate each other. हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट कर दो, स्ट्रेट को गे के अगेंस्ट कर दो, सब लड़ते पड़ते इधर भागते रहेंगे, बीच में हम पैर जमा लेंगे. So it's really a matter of that, and being mindful and remembering that how many times people that tell us that there is differences between us are benefiting from it. I don't want to take names, but there are, you know, political institutions that will disturb and distribute minorities against majorities only to take in the majority's vote. So it's really a matter of actively, you know, asking ourselves, what are we doing when we fight? What are we fighting for, and what is it good for? And when you realize that it's good for nothing, diversity immediately, you know, you find your way. Thank you so much, Ella. I see a pool of questions coming in the chat box and more in the audience as well. All right, we'll take up one last question. All right, due to time constraint, we'll take up the questions once we have the panel, other yeah. segments. Okay, thank you so much. Thank You were a so wonderful much, Ella. audience. Thank you.
बहुत आसान है पहचान इसकी, बहुत आसान है पहचान इसकी, यदि दुखता नहीं तो दिल नहीं है। कभी तो रात को तुम रात कह दो, ये काम इतना भी अब मुश्किल नहीं है। So Ella, we really love you, and not because बहुत सारा इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड ऑल, बट यू हैव डन लोगों को जगाने के लिए कुछ. So till we have a panel round here, लोगों को बोलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंस्पायर करना जरूरी है जब तक यहाँ सारा सेटअप हो रहा है. So we have a quick round of tongue twisters here. So I am coming downstairs and going to start this. I guess first, Reena ma'am, you will have to say Ellie edited it 5 times. In Ellie edited it 5 times, and you have 10 seconds. But fast, huh? Yeah. So your time starts now. Ellie edited, Ellie edited, Ellie edited, Ellie edited, Ellie edited, Ellie edited. Whoa. Okay. So very close, but that was Ellie edited it. Yeah. Okay. थोड़ा सा हिंदी में भी करते हैं यहाँ पे कुछ. पीयूष सर, लपक बबुलिया लपक, अब ना लपक भू तो लपक भी कब. थोड़ा सा चेंज करते हैं. ऊंट की मूड़ ऊंची, घींच नीची, पीठ ऊंची, पूंछ नीची ऊंट की. ऊंट की मूड़ ऊंची, घींच नीची, पीठ ऊंची, पूंछ नीची ऊंट की. ओके, सर ने पहले सरेंडर कर दिया है. आई गेस अरुण सर की यहाँ पे आवाज आई है. सर, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है. Okay, so I guess yes sir, please please. Many of us must have heard that limerick, no? Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her batter, and her batter wasn't bitter, so it was better. Betty bought a bit of better butter. बटर, मेरे को इतना समझ आया, कुछ बटर की बात हो रही थी. एक हिंदी में रसखान ने हजारों साल पहले एक हिंदी में जो पहला आई गेस रैप था वो लिखा था. सो दैट आई विल से एंड देन विल कंटिन्यू दिस पैनल सेशन. Ashutosh, about Lord Ashutosh. Krishna. Yeah. Arun sir rocks, Ashutosh shocks. Yeah, right. I was about to leave the mic. Yeah, so till we can call the panel. All right. Now we'll move on into our next segment, a panel discussion with Ella Dev Verma, Reena Rai, and our CEO, Mr. Arun Mishra. Please welcoming them onto the stage, please. Zordar Thalia. I can't hear you. Ashutosh, someone there is not clapping. Unko tongue twister dena ek baar. Whoever is not clapping, you'll get a tongue twister. Okay, so now everyone is clapping. All right, we have Ella Verma here, our CEO. Our CEO Arun Mishra and Ms. Reena Rai. Let me take a moment to introduce Ms. Reena Rai as well for you. All right, Reena is the one that brought Miss Trans Pageant India into existence. She has paved the way to not only Ella, but also more Phoenix who want to grow up from the ashes. And she's also CEO of Ardhanadeshwar Empowerment Foundation for everyone. Yes. So let's start with the panel discussion. Ruchika and Hansa ma'am, are you here? Over to you.
Hello. It has been quite a power-packed day today, and we had a lot of questions coming up. So we have a couple more questions for you, and we would love to hear your thoughts on the same. So my first question would be to Ella. So as a successful social media influencer and a model, you have been recognized as the first runners-up for Miss Trans Queen. So what inspired you to take up this profession? A profession which in itself has evolved over the period of time, redefining what beauty means altogether. So I would love to hear your take on that, as well as, of course, you would have faced many unique challenges in your career journey. So if you could just share some of those. And just one last question to this. You mentioned that you had a very transformational and a defining moment, which inspired you to take this journey. So there would have been times where you would have felt scared and apprehensive about it. How did you go about that? You know, the thing with social media in particularly, it came as an escape first. I'm going to be 100% honest with you. When I got on social media was during the lockdown. और लॉकडाउन में क्या था ना कि इतने टाइम से मैं घर पे हूँ, मैंने स्कूल के बच्चों की बातें नहीं सुनी, इधर उधर के ताने नहीं सुने, सिर्फ मैं अपने घर पे हूँ, and I felt comfortable enough to वापस वो सारी हॉबीज पिकअप करने को, मेकअप, डांसिंग, ये सब, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो भी मेरे को पसंद था, जैसे कपड़े पहनने पसंद थे. And then I got on the internet just as an escape, an outlet. I felt free and comfortable enough. That's why I got on. Then the traction came. The people came and the compliments came. And then it was a matter of, you know, as I said, actively pushing them away because आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अच्छी हूँ ही नहीं. And then the transformative moment that I mentioned when someone told me, you don't have to blame yourself for everything. And that's where my career actually literally took off. It really did took off because I was so good at all these things that I did that I was hiding from the world. You know, I had such good things to say and I started speaking. So I'll tell you why this was important, because up until this moment, I was only on the internet looking good and making things that look nice visually. Yahan pe, when I stopped feeling guilty, when I stopped feeling stupid, that is when I started speaking. And my opinions and the way that I think and how it resonates with so many people, that's where it took off. And what motivates me when I go through my messages and I see children messaging me, children 11, 12-year-olds, speaking of violence, speaking of harassment, it really does shake something within you when you realize that, okay, this is my community, you know. You can really, you have two options, anybody does, is I be happy and life is fine, but I couldn't have that on my conscience. It was like a reality check that came, and that is what drives me at the end of the day, because I want other people of my community to see the light. You know, I want them to be able to empower themselves and not wait for saviors. That's my mission. That's what keeps me going. Very beautiful. Very beautifully put. So Reena, next question would be to you, because we have heard Ella a lot, and you also you are also playing a key role. So we would like to know how you met Ella. Then, because you are supporting and doing a lot of work for this community, so what inspired you? Like how it started, what happened, and because I think as a heterosexual woman, you might have been questioned many a times. Yes. And you have experienced a lot of backlashes. So how did you overcome that? So first of all, I want to tell that I didn't met Ella, Ella met me. So मैं मिली थी विप्पी से, और विप्पी एक पार्लर में काम करती थी एज अ विपिन. और जब मैं पार्लर में जाती थी, हम सबका शायद ऑल वुमेन रेजोनेट विद मी, हम सब जब भी पार्लर जाते हैं, वी हैव वन फेवरेट पर्सन जिससे हम बोलते हैं कि हमारी आईब्रोज बना दे, ये सही बनाएगी, और किसी के पास नहीं जाते. So it was Vipin for me, but even then I knew there was a Vipin inside her, and I never treated her specially. I never tipped her, but even then I don't know what she found in me, and मैंने उस पार्लर में जाना बंद कर दिया. और उसके बाद
हम दोबारा से मिले 5 साल बाद, और विपी बन चुकी थी तब तक, उसका ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया था। और उसने जैसे ही मुझे पार्लर में देखा, शी वाज लाइक, मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं पता है गली के हर कोने तक जाके सोचती थी ये शायद उनका घर होगा। सो आई वाज अमेज्ड, मुझे क्यों ढूंढ रही थी, मैंने तो कुछ ऐसा अलग नहीं किया। एंड आई टोल्ड हर कि आई नेवर ट्रीटेड यू स्पेशली, differently. So she said, exactly, only you never treated me differently. मैंने आपकी आंखों में वो देखा जो मैं अपनी माँ की आंखों में देखना चाहती हूँ, कि वो सिर्फ मुझे देखें, वो मेरा शरीर ना देखे, मेरी आत्मा देखे, कि मैं विपिन नहीं हूँ, मैं विप्पी हूँ। पता नहीं आप कैसे देख लेती हो, जब आपके साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं विप्पी हूँ, और आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट वे, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? आई सेड डेफिनेटली। और उस दौरान मैं जब उससे मिली तो मैं उसके मिलने के 2 महीने बाद आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स हाउ विप्पी केम इनटू माय लाइफ एज अ सेवियर। क्योंकि उस वक्त जब मैं अपनी दोस्त को खो चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ से कभी उभर नहीं पाऊंगी। और उसको जब खोया था तो ये ज़रूर सोचा था अपने मन में कि मुझे ऐसे ही नहीं जाना। You know, my mother always used to say that you all are sent for a reason. And from then I started asking God, what is my reason? God, why you have sent me? And जैसे ही मेरी मुलाकातें विप्पी से बढ़ने लगी, हम लोग मिलने लगे, जुलने लगे, साथ बैठने लगे, जैसे एक अपने दोस्त के साथ आप बैठते हैं और घूमने निकलते हैं। जब मैं उसके साथ पहली बार घूमने निकली, तब मुझे रियलाइज हुआ being a trans woman is so difficult, you know. आप अगर सड़क पे घूम रहे हैं तो लोग आपको सिर्फ एक ही नजर से देखेंगे, या तो ये भीख मांगने आई है या फिर ये सेक्स वर्क करती है। जबकि विप्पी को मैंने जब से अब तक देखा है, आई थिंक अब मेरे को 10 साल हो गए विप्पी को जानते हुए, वो शुरू से पार्लर में काम करती है, इज्जत की रोटी कमाती है, अपने घर वालों को हेल्प करती है। बट लेकिन लोगों का जो रोड पे चल रहे होते हैं, उनका सबका एक परसेप्शन था, या तो ये भीख मांग रही होगी या ये सेक्स वर्क कर रही होगी। और क्योंकि मैं उसके साथ होती थी तो हमेशा उन्हें लगता था कि शायद मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। एंड बहुत बार लड़ाइयाँ हुई, और बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आए कि ये सोचा कैसे आपने, ये पैजेंट के बारे में आपके दिमाग में आया कैसे? तो दिमाग में तो नहीं आया, दिल में आया। मैं अपने दोस्त को वो जगह दिलाना चाहती थी जो मेरे पास है। जब मैं सड़क पे चलती हूँ तो अपने गर्दन को उठाकर चलती हूँ, तो मेरी दोस्त क्यों झुकाकर चले? मैं चाहती थी कि उस लिपस्टिक को, उस टेलेटोस को जिसको देख के उसका मजाक उड़ाया जाता है, मैं कुछ करूं। एंड that hitting moment was when one day Vippy came to me and she told me that I want to commit suicide. I said, why? She said कि मेरे को कोई समझता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। सब मेरे को कहते हैं कि लड़के की तरह बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो, उसके सामने मत जाओ, बाल मत बढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। And the moment she said कि I want to commit suicide, and I was like, no, मैं अपनी दूसरी दोस्त नहीं खो सकती। और ये जो प्योरली प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, वो सिर्फ फ्रेंडशिप और लव के लिए बनाया। ये किसी जेंडर को सोच के नहीं बनाया मैंने, किसी कम्युनिटी को सोच के नहीं बनाया। मैं सिर्फ इसलिए बनाया कि जो हम अपने दोस्तों के लिए फील करते हैं, हम जरूरी नहीं है कि हम उस जेंडर से बिलोंग करते हो, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तभी हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और you know, most of the time people ask me, are you from the community? आप lesbian है क्या? आप trans woman है क्या? People message me on internet ऐसे, मैम आप trans woman लगती तो नहीं है। So you know, I tell them I'm not from the community, but the community is from me. A mother like me gives birth to these kids. अगर एक माँ बन के आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो उस माँ होने का क्या फायदा है? क्योंकि माँ के लिए जो फीलिंग है वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होती। वो किसी को जब वो पहली बार अपने
को वूम में फील करती है कि उसके बच्चा है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचती कि उसके पास लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है। वो सिर्फ उस मोमेंट से ही उस बच्चे से प्यार करने लगती है। सो मैं उन माओ को जगाना चाहती थी, उन माओ को इंस्पायर करना चाहती थी जिनके पास बच्चे हैं ऐसे, और वो शर्माती हैं ये कहने में कि ये मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, फिर भी मैं इस चीज के लिए खड़ी हुई, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हूँ और ये भी सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, एंड हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। Very inspiring. Thank you, Reena ji. That was truly inspiring and very touching. My next question would be to Varun sir. So, sir, our organization is taking many steps to promote inclusivity. And given that we operate in a traditionally male-dominated industry, over the past 1.52 years, we have taken a lot of initiatives that promote inclusion across all walks of life, be it regional diversity, be it gender diversity, or having a positive and inclusive approach towards sexual orientation as a whole. So what are your views on how can organization promote a more inclusive and accepting environment? And what are the initiatives that we have done right, and what more that we can do going forward? So two things. One is organization is always a reflection of the society that the organization is in. So you cannot put rules inside the organization that when we are in office, we are all very liberal, very accommodative, but the moment we are out of office, we are conservative. It doesn't happen. If we have to change, the change has to come from the society and then comes here. So our target in this movement is not hierarchical or rule-based, that we have not made a rule that, okay, so many people must get employment. That's not the idea. Idea is first, let us all accept what is the reality. However, we may try to turn our eyes away from it. The reality is what we see in the society. And then we say, if this is the reality in the society, how do we build our organization which truly reflects the society that we come from? Then only the organization will be stable. Otherwise, world over, people have tried to create artificial society. Military dictators have dictated country and thought that by rule, by dictatorship, they can, like Hitler thought that he will create a generation of only very clean and pure Germans whose DNA are protected and they will be the super race. It never succeeds. If the reality of the society is this, then our organization also has to be a part of the society, and then organization has to be tolerant to all views of people, all kinds of preferences of people. And then what happens is you will automatically find more and more creativity coming in, people having different thoughts. We are already seeing with gender diversity coming in. For every problem, men had a typical one-track thinking and hammer nail approach. From that, we are moving to women giving you multiple views on the same problem and then trying to solve it. And then more and more people will come in, will have more and more. There is nothing that we are doing kind of being generous to anyone. It is all merit-based. And second, the change that we have to bring. When you see a beggar on the street who is normal like you, he may be a Brahmin beggar, a Dalit beggar, or any caste beggar. We don't extrapolate that beggar to our life and say that ये अगर ऐसा है तो इस community का सारे लोग ऐसे ही होंगे. We say कि he is one of. हम लोग सब ठीक है, वो one of है. But when we see a transgender on the street, for whatever reason, we believe that anybody born like that, we extrapolate immediately. अगर उसके जैसा बाकी सोसाइटी नहीं है तो इनके जैसे बाकी सोसाइटी क्यों होंगे? There will be extraordinarily brilliant transgender, there will be extraordinarily brilliant artist transgender, it can be anybody, no? But हम लोग वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, ये सब ऐसे ही होंगे. जबकि अपने लिए हम लोग अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं, वो बेगर जो है वन ऑफ है. When you see on 15th August, हम लोग सब झंडा फहराते हैं, झंडा लेके घूमते हैं, और none of us stop by to see the beggar's child on the road कि वो भी इंडियन है. हम लोग के लिए क्या है? हम लोग इंडियन है. वो जो है ये मिसफॉर्चून है. उसको कैमरा व्यू से हटा देने से इंडिया इज बेटर. शाइनिंग. उसको खाली you have to move him out of the camera view. So that is the way the society has treated.
कि आपको गाड़ी में जा रहे हैं, बच्चे हैं गाड़ी में, ट्रांसजेंडर दिख गया, उसका आंख बंद कर दीजिए, उसको भुला दीजिए, इसको देखना नहीं है. So we believe that by blocking out vision, we will make a pure society, which no society can survive like that. We have to accept it is part of our vision. All of us have faced discrimination in our life. All of us. किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, डिस्क्रिमिनेशन है. I have seen people being recruited from lower caste communities, tribal community. Only one appointment, no promotion all through the life. जब भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड 90% are forward caste. That poor fellow comes, उसका अंग्रेजी सही नहीं है, उसका सब ठीक है, गेटअप सही नहीं है, वो लीड कर पाएगा क्या? And that poor fellow, after getting an employment, doesn't get a promotion all through. And the view is drilled into our mind कि the rest of the community, so-called forward caste, are better off. We don't understand that whatever we are is because of thousands of years of discrimination. So this sensitivity has to come in all of us कि जो आज हम हैं, हम अच्छे घर में पैदा हो गए, ये इसलिए कि हजारों साल से मेरे लिए अलग रूल चला है सोसाइटी में, उसके लिए हम आज हम हैं. अगर वो हजारों साल से वो रूल नहीं चला होता, आज हम नहीं होते. And that feeling we must say कि आज का डेट में हम क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे लोगों को ला सकते हैं. And it can go anywhere, nothing to do with only transgender or anything. It can be anything. You may have I have seen girls not so fair and not getting married and cursing themselves. जब कोई लड़की बोलती है मेरा तो चेहरा ऐसा है, मेरा तो शादी नहीं होगा. How traumatic, how pathetic that can be. And the whole society just moves on. ठीक है, इसका तो शादी नहीं होगा. These are some things, pains all of us. And being educated, if we, whatever little power we have being in the corporate, if we can't bring that little amount of social change, perhaps this life is not then worth it. Very truly said. So next question to you, Ella. So like in your talk, you had talked about psychology. Okay. So whenever a discussion happens on health, we generally, we don't actually talk about mental health while addressing the community. The discussions are mostly focused on physical health or sexual health or something. But this is very important aspect. So what are your thoughts on that? And also, what kind of misconception or stereotypes you have encountered and how you have addressed them? I think I would first like to thank you for that question, because often mental health या मानसिक स्वास्थ्य ऐसी चीज है ना कि लोग बात नहीं करना चाहते हैं तो समझ नहीं पाते कैसे करें. You know, there's people who want to talk these days but don't know how. तो वो भी बड़ा, और ये मैंने realize ना कैसे किया. It was a very personal experience. मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब मेरे बाल लंबे हो गए, अब मेरे को जैसे कपड़े पहनने थे पहन लिए, मेकअप कर लिया, नाम बदल लिया, सारा I transitioned how I want to. लेकिन अब जब मैं सड़क से जाती हूँ और मेरे सामने से कोई मुझे देखता है तो मेरे हाथ क्यों कांपते हैं, मेरे पैर क्यों कांपते हैं. मुझे क्यों लगता है कि जो मुझे देख रहा है वो मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है या मुझे मेरे साथ बुरा ही होगा. तो the reality is no amount of surgery, no amount of lipstick, no amount of crowns वो पेन नहीं मिटा सकते जो आप एक्सपीरियंस करते हो, भले वो स्कूल बुलिंग से हो या आपके घर वाले आपके बारे में कुछ बोलते हैं या कहीं आपके घर वाले आपको डिसोन कर देते हैं. तो उसका पेन मेडिकल ट्रांजिशन अलोन नहीं फिक्स कर सकता. यू नो, फिजिकली यू कैन चेंज ऑल दीज थिंग्स, but what's here is what really matters. As long as there's not balance and peace up here, everything else will always be out of place. And that's what I realized, you know, when I transitioned ki main khush kyun nahi hu. Like I've done everything, you know, I've taken the medicines, I've taken the pills, I've done everything, so now I should be happy. And that's when I realized, oh, this is why mental health is so important. And then when I really embraced that as a part of my life and I actively worked on myself and changing
my mentality about myself, दुनिया तो मैं बाद में बदलूंगी, पहले मैं अपने आप को तो अच्छे से ट्रीट करूं, आप लोग बाद में करना, लेकिन पहले मैं खुद को रिस्पेक्ट करूंगी, मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगी. और that's where I realized how important mental health is. And it's not just, transgender women. It's a matter of limiting, how limiting the mind can be. मैं आपको एक बहुत funny तरीके से समझाती हूँ. जब मैं लड़का थी और मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता था, मेरे पापा मुझे ड्रॉप करके आते थे, and he was like, ओहो मेरा बेटा, my son's got mad game, he's got all the girls, and he was very proud of me. Now that I've transitioned and I live as a woman, now if I want to go out with a boy, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या जरूरत है ये सब करने की, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. तो I've seen it first hand. और बात पता है क्या है, मैं सोचती हूँ कि I have grown up a लाडला बेटा, I have grown up with freedom and liberation. तो जब मेरे से छिना तो मैं मेरा हक मांगूंगी कि मैंने तो फ्रीडम का चक रखा है ना, मेरे मुंह पे तो फ्रीडम का टेस्ट है, मेरे को वापस चाहिए. तो sometimes I wonder, biological women who have never known the male privilege, they will never find out in their life that they can do these things. They can travel, they can be independent. I knew that because I was conditioned that way. So women, biological women, they're conditioned to believe that you are incomplete, तुमको सहारा ही चाहिए. और जो आप देखते हो, as long as you don't explore the world, आपका perspective बड़ा limited रहता है. आप सोचो कि I think we were having a conversation earlier also कि rural parts of this country, एक बच्ची है, उसका घर का माहौल अच्छा नहीं है, वो देखती है कि पापा सारा दिन बाहर रहते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, रात को मम्मी पे हाथ उठाते हैं और अगले दिन मम्मी खाना बनाती है, सब ठीक हो जाता है. वो बच्ची की दुनिया वहीं शुरू और वहीं खत्म. And then when that happens to her, when she gets married, she says, this is normal. मैंने यही देखा है, this is my normal. And that is why exploration and understanding and really growing your perspective in life is really important, because how much of life have you not seen because you weren't allowed to, or you weren't allowing yourself? And that's what understanding mental health does. It lets you live life. Yeah, actually, it is very, very important, because you also told in your speech that how a child feels. So it's not only about child, even after you transform, then also this is a very important thing that needs to be taken care of. And when you mentioned about the kind of discrimination and the things that I have to face, I have to really, go back to what sir just said about कि आप कैमरा के व्यू से हटा दोगे और आपको लगेगा कि सब परफेक्ट है. और ये होता है इस कंट्री में. पता है क्या होता है, कोई जाके बोलता है ना, मम्मी मैं गे हूँ, तू गे नहीं है, इसकी शादी कराओ ठीक हो जाएगा, तू लेस्बियन नहीं है, इसकी शादी कराओ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी आएगी ठीक हो जाएगा. We're all adults here. I'm gonna have a candid conversation with you. There are a lot of women. The reality is, and the thing is, पता है क्या होता है इससे? You will take, let's say, a gay man who likes men, उसकी तुम जबरदस्ती शादी कराओगे. Marriage will not be happy. They're not compatible partners ना, तो आपस में पति पत्नी की खुशी और वो सब नहीं है. उसके बाद शादी के 1 साल के बाद घंटी बजनी शुरू की, बच्चे बच्चे बच्चे, प्रेशर में आप बच्चे भी करोगे. बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्पी हेल्दी पेरेंट्स को देखना. पेरेंट्स की एक हेल्दी रिलेशनशिप बच्चों के लिए देखना बहुत जरूरी है. फिर उन बच्चों को अपने पेरेंट्स में खुशी नहीं दिखेगी, अपने हाउस होल्ड का माहौल अच्छा नहीं दिखेगा, उन बच्चों की मेंटल हेल्थ गई. तो आपने बाहर पे ऐसे सरफेस लेवल की खुशी दिखाने के लिए लाइन से इतने लोगों की लाइफ खराब कर दी, जबकि आप सिर्फ कह सकते थे हाँ मेरा बेटा गया और ये चलता है. और इतना ज्यादा हिपोक्रेसी है ना यहाँ पे हमारे कल्चरली. वी थिंक अबाउट इट. आई गिव दिस एग्जांपल वेरी ऑफन. आप सोचो कि एक घर है, उसमें 2 बेटे हैं, ठीक है. एक बेटा गे है, दूसरा बेटा मैरिड है और वो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है. जो बीवी पे हाथ उठाता है वो उसका प्राइवेट मैटर है, वो उसका घरेलू मामला है, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे. लेकिन दूसरे बेटे की सेक्सुअलिटी, वो हमारी ओपिनियन चलेगी, उसके बारे में हम बहुत बोलेंगे, उसने फैमिली का नाम डुबा दिया. तो द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. आप अपना रिस्पेक्ट और अपना ऑनर डाल कहाँ रहे हो? It's really a matter of realizing what is important for you. Yeah, very truly said. Somewhere the hypocrisy of society comes out.
So I have a question for both Reena and Ella. So you have worked, Reena, you have worked with several educational institutes and corporates before, and you are, Ella, you're a social media influencer and a content creator, and you have taken many initiatives to create awareness about the community. So to both of you, what are the challenges that you face doing what you do? And could you highlight any initiatives or projects that you have taken that have contributed towards mitigating the gap between the community and the society as a whole? डेफिनेटली जैसे कि एला ने भी पहले बोला, और जब मैंने इस पे काम करना चालू करा तो बैकलैशेस बहुत सारे थे, और कम्युनिटी तो जिसके लिए मैं काम कर, जो मेरी अपनी कम्युनिटी थी वो तो डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन करती थी, लेकिन जिस कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रही थी वो भी क्वेश्चन करती थी एला की तरह, कि अब तक तो किसी ने नहीं किया, ये कौन आई है, ये क्यों कर रही है, इसका क्या फायदा है, कुछ कमा रही होगी मेरे से, हमें यूज कर रही है। सो मुझे टाइम लगा, क्योंकि पहले मेरे लिए भी बहुत ऐसा होता था कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन जिसके लिए कर रही हूँ वो खुश नहीं है। बट देन आई नो कि इतना सप्रेस किया है हमने इस कम्युनिटी को, इतना, वो कहते हैं ना कि 4 थप्पड़ आप लगाओ उसके बाद आप प्यार के लिए हाथ बढ़ाओगे तो बंदा तो पीछे ही हटेगा ना, वो तो आगे आके आपको अपना गाल नहीं देगा। सो धीरे धीरे इस पे काम करना चालू किया, प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया किया पहला, और इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरे वर्ल्ड ने बात करी उसके बारे में। नोबडी न्यू कि इट वाज ओनली अ वुमन, वन वुमन हैंडलिंग दिस। लोगों के पास गई, लोगों से बातचीत करी कि मैं ऐसे ऐसे पैजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले तो लोगों का मिथ ये है कि पैजेंट जो है इट्स ओनली अबाउट ब्यूटी, it's not only about beauty, it's about empowering and amplifying the voice of a person, you know। तो उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो ट्रांस वुमेन आई, उनकी वॉइस आगे गई, लोगों, उन्होंने लोगों से बात करी, आगे सब कुछ किया। बट इवन देन आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नो। और वो मुझे रियलाइज हुआ उसी जर्नी में जब मैं उस पर काम कर रही थी, और मुझे लगा कि चेंज जो है ना वो सबसे पहले अपने घर से आएगा। और जब मैं काम कर रही थी तो मेरी बेटी से मेरे गे फ्रेंड ने बोला कि मुझे मासी बोलो। तो मेरी बेटी ने कहा, व्हाई शुड आई कॉल यू मासी, इज अ बॉय। सो आई टोल्ड हर, maybe sometime it happens, God sends a woman's soul trapped in a man's body, or a man's soul trapped in a woman's body. So she was clueless. I said, okay, tell me which color you like. She said, keep pink. I said, okay, if I'll put you in the boy body, will you start liking blue? She said, no, nothing. It's not about body, it's about choice. Even though you put me in the boy body, I will still like pink. And the moment she said that, she understood what I really wanted to tell her, कि सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा वो चाहता है, ना कि जैसा कि हम चाहते हैं। और जब वो 10 साल की बच्ची समझ गई तो मुझे लगा कि मुझे और बच्चों को जगाना चाहिए। And I've started my NGO called Deepa Ardhanarishwar Empowerment Foundation, through which we have started this project called We Are Your Strength. And we start going to schools, colleges, universities, corporates, and start inspiring, kids to be a strength of each other. जब विप्पी और अपनी स्टोरी बताती थी तो यही बताती थी कि दोनों ने मिलके, हम जब दोनों को के लिए स्ट्रेंथ बने तो ही हम आज यहाँ बैठ पाए, पहुंच पाए। अगर मैं विप्पी को नहीं समझती, अगर विप्पी मुझे नहीं समझती, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। एंड इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग अबाउट जेंडर, कास्ट, कलर। इट्स अबाउट जो आपके साथ आपके नेक्स्ट बैठा हुआ है वो इंसान है, पहले उसको समझो, उसकी इच्छाओं को, उसकी भावनाओं को समझो, और उस पे ही काम करना हमने फिर चालू करा। और आई एम वेरी वेरी प्राउड टू टेल दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 50-55 कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, एंड जितने भी हम जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स में गए हैं,
मोस्टली कम आउट स्टोरीज आई हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि आज हम जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं या जिस भी जगह बैठे हैं वहाँ पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे कमिंग आउट. And after that, we started talking to the government, and we want them to include this in education curriculum, because जब हम इसको सही टाइम पे सही वक्त पे बच्चों को समझाएंगे, शायद आज से 10 साल बाद हमारे पास इंक्लूसिव सोसाइटी होगी. So that's how I did my part. Well deserved, and such a beautiful journey. And of course, I've done my part as well. And I, without wanting to sound crude, a major part of my part was being there. It's important for me to be seen. It's important for me to be heard. लोग मेरे से पूछते हैं कि आप वहाँ क्यों गए, आपको कैसा लगता है कि आप फर्स्ट नहीं आए, आपको कैसा लगता है कि आप विनर नहीं हो, आपको कैसा लगता है कि आप के नहीं हो. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जीतना होगा जरूरी किसी के लिए, लेकिन ज्यादा जरूरी था मेरा उस स्टेज पे होना. Exactly, I had to represent my community and show it in a way जिस तरीके से वो अभी तक नहीं देखी गई थी. I wanted a real perspective and I wanted a fresh perspective. And that's what I've been doing as well. I've gone to so many places, done sensitization workshops with Miss Reena and in so many college campuses. The funny thing is, आज तक I'd always tell them कि कॉलेज में स्टूडेंट बनकर नहीं जा पाई, बट मैं चीफ गेस्ट बनकर चली गई तो मैं काम चला लूंगी. So doing that sensitization work. I also create educational videos on YouTube and Instagram about the psychosocial aspects of being transgender. Again, क्योंकि वो चीजें बातें नहीं होती हैं उसके बारे में, and really about psychology in general. And now I'm gonna very soon represent our country internationally, and I again want to highlight the fact that this is not my country becoming modern. This is my country becoming authentic. This is us being who we were born, and this is not me asking you for anything that isn't my birthright. So really instilling that force within the community has been what I've been doing through my platforms and my voice, and altogether just creating a change that is independent, because I did wait for a very long time, and I don't want anyone else to be waiting. So that's what I'm doing. So I have a last question to the panel, which is open to all. So a lot of organizations are taking up initiatives to onboard people from the community. And during this Pride Month especially, I've seen a lot of corporates taking up sensitization and awareness sessions. So do you feel to some extent these initiatives are promoting tokenism, or are the organization as a whole evolving as to how they look at inclusion and equity as a whole? So if you could shed some lights on that. See, I'll tell you, it is Pride Month. And the funny thing is, this is our business ka time. Next month, the LGBT community is gonna be business mein manda padne wala hai next month se, because they only care about 1 month a year. But I have been in a lot of spaces like that, and there are genuine efforts as well. And the best thing that I'll tell you is when I'm there. You know why? Because sir here had the option of having someone who was educated on the topic. He had an option of having just an activist. He didn't have to have someone from the community. He could have had someone who just knew our stories and could reiterate in front of everyone. But he wanted someone from the ground level, someone who's seen it firsthand. And that makes the real difference. Again, you're connecting to me because I'm not reading off some charts to you. I'm telling you my life, and I'm speaking to you human to human. And that's where I think real change comes from. And obviously, is there a bunch of tokenism? Absolutely. There is 100% people doing it just to have done it, doing it just because it's trendy, but without wanting to do. But even then, I feel that it's, one step ahead. और लोग अब मुझे लगता है चेंज आ रहा है, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही चीजें चेंज होंगी. Like sir said that he has already given jobs to trans people, and आपने जैसे कहा, मैं आपसे
बिल्कुल अग्रीड हूँ कि सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं और सबके सबको उस कंपनी में ट्रीट करने का तरीका एक अलग होता है और हमारे को उस तरीके को चेंज करके लेकर आना पड़ेगा। जब आप ट्रांसजेंडर को हायर कर रहे हैं तो कुछ पॉलिसीज में भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें होती जैसे मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई हूँ। मैं अगर घर जाऊंगी मेरे पास 2 रोटी खाने के लिए घर होगा, खाना बनाने वाला कोई होगा, लेकिन अगर एक ट्रांसजेंडर काम करने आ रहा है उसको घर जाके खाना भी बनाना है, उसको घर से बाहर निकाल रखा, उसको अपना घर का खर्चा भी उठाना है। सो उस हिसाब से हमें पॉलिसीज को अमेंड करना पड़ेगा फॉर देम। यू हैव टू मेक स्पेशल पॉलिसीज फॉर देम, मेडिकल पॉलिसीज, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए अपनी बॉडी से अलाइन करना, आई थिंक मुझे लगता है अला सबसे इम्पोर्टेंट हर एक ट्रांसजेंडर की होता है कि वो अपनी बॉडी से वो अलाइन करे। उसके लिए मेडिकल एड्स अगर कंपनी उन्हें देगी तो मुझे लगता है दैट विल बी अ रियल इंक्लूजन and that will be a real empowerment. And speaking of tokenism, in the real world where I really saw tokenism and where it really took a toll on me, not just in the corporate spaces actually, was when I talk about my identities. Like I said कि government की तरफ से हमको provision है, government की तरफ से हमारे favor में law है, लेकिन जब उसको access करने के लिए मैं in office जाती हूँ तो जो table पे बैठे हैं they're not sensitized. तो आपने you come out with a provision, you come out with a law, but अगर आप लोगों को बताओगे नहीं तो कैसे change आएगा? So it's a matter of not necessarily implementation but also sensitization, yes, which is lacking to quite an extent. Which is lacking to the core. Like she's been appointed as a influencer of Delhi Election Commission. आपको ये बताना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ ये इंसिडेंट्स के। उन लोगों ने कॉल किया और उन लोगों ने बोला कि हम एला को इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं और शेनी सोनी मेरी अनदर क्वीन एज अ आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऐसे ठीक है, मैंने इनसे कनेक्ट करवा दिया, इनके पेपर्स भेज दिए। देन दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि रीना मैम इनके ना आईडी कार्ड पे टी होना चाहिए। मैंने बोला क्यों? इन्होंने फीमेल लिख रखा है। मैंने कहा आप बताओ आपने ट्रांसजेंडर की लाइन कहाँ बनाई है? जब वोट देने जाते हैं क्या आप एक आदमी औरत और ट्रांसजेंडर की लाइन बनाते हैं? नहीं बनाते ना। और अगर वो आप टी दे भी रहे हैं तो आप क्यों बॉक्स कर रहे हैं? दिस इज देयर चॉइस what they want to be called. They want to be called female, male or transgender. That is their choice. You can't box them in the transgender T box. And most of the trans women election commission ने जो इसीलिए ही हमको करा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। वोट तब डालेंगे ना जब आप उनकी आइडेंटिटी होने देंगे। आप तो उन पे फोर्स कर रहे हैं आइडेंटिटी। जगह नहीं होगा ना। हाँ। फॉर्म में भी तो होगा कि मेल एंड फीमेल, भाई और तो कुछ होगा ही नहीं। जब वो कोई फॉर्म भरता है उसमें कहाँ कुछ रहता है? कोई नहीं होता है। ट्रांसजेंडर भी होता है तो फिर उसके बाद आपके तो पास आजकल थोड़ा थोड़ा आने लगा फैसिलिटी है। देखिए सारे फॉर्म में रहेगा मेल फीमेल, और तो कुछ रहता नहीं। राइट। Flying today and Reena ma'am was telling me the story. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to flight. And then you don't, हमारे लिए category नहीं है तो हमको उसमें क्यों डाल रहे हो? If we're fine in another category. आप कोई भी इस बारे में जनरली बात करता ही नहीं ट्रांसजेंडर, तो फिर आप क्यों डाल रहे हो? जो एक ट्रांस मैन है उसे ट्रांस मैन ही रहने दो ना। आप मैन में डाल दो, मैन की लाइन में खड़ा होगा। क्यों आपको वैसी तकलीफ है उनके लिए सब चीजें बनाने में? ना आप उनके लिए टॉयलेट बना सकते हो। Men and women doesn't sound बेचारा enough, no? They want the बेचारा बेचारा story कहाँ से निकलेगी फिर? So I think we had a very good panel discussion and a lot of things have been already discussed, and I'm sure a lot of queries have also been addressed, and there, the questions that were arising in our mind might have got addressed. So with this, we would like to close this panel discussion. So over to you, Ruhi. Before we close, we would like to take a couple of questions, sir. Okay, so we'll close the panel discussion for now. Over to Sonika and Ashutosh. So thank you so much, panel members, for being with us. As a token of
token of gesture, we have some memento here. I would like to request our CEO, Shri Arun Mishra sir, to present Ella and Reena ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. We have Yash with us from Chanderia for vote of thanks. I would like to request for a quick vote of thanks from Yash. Yeah. He's joining us online. Hello, I'm audible? Yeah. Yeah. Hi, my name is Yashwardhan Pandey. I am hosting in Chanderia. Firstly, I'm very thankful for Ella. She's coming and उन्होंने बहुत कुछ बताया ट्रांस के बारे में जो लोगों को नहीं पता था. हमारी कम्युनिटी में भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि बाहर निकल के नहीं आ पाते, अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते, बट एला ने काफी हद तक हमें वहां तक पहुंचाया है. और मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा एला को, और रीना मैम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो एनजीओ में ऐसा काम कर रही है जहां पर ट्रांस लोगों को समझने का, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ जब वो घर जाते हैं ऑफिस से उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता है. ट्रांस के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि ठीक है उनके पास फैमिली नहीं है, बाहर समझने वाला कोई नहीं है, बस हम हैं जो अकेले हैं. तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, सुसाइड सबसे इजी लगता है कि ठीक है वो कर लेते हैं, बट नहीं. अगर वो लोग एजुकेशन लेंगे, उन्हें भी राइट्स मिलेंगे, वो लोग भी आगे आ पाएंगे. और जैसे हिंदुस्तान जिंक में आज मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कमा कर खा सकता हूँ, मैं अपना मेडिकल एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ, तो मैं भी आगे ग्रोथ करूंगा, मुझे भी जीने की इच्छा होगी. सो थैंक यू एला, रीना मैम कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और ट्रांस के बारे में इतना सब कुछ बता रहे हो और हमारी कम्युनिटी आ पाए. और ये हम सभी ट्रांस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप लोगों ने आकर हमारे बारे में इतना सब कुछ बताया, इतना अवेयर. थैंक यू सो मच. Thank you, Yash. We can see the transformative power of wisdom that Ella has shared. She's truly an inspiration to each one of us present here. Thank you so much once again, Ella and Reena. It's been an honor to have you here for an incredible event. Thank you so much, everyone. We have arranged small refreshment outside. So please gather outside. Yeah, head out for high tea.